Utkal, we are defiant of challenges, old and new. Such are we have always been, yesterday, today, and tomorrow. We train to fight, combat ready to attack each objective, always on a mission mode. We believe in mission, integrity, and excellence. We are the air warriors, protectors of our nation. Respected for the valor, sacrifice, and dedication beyond the call of duty, the Indian Air Force is the fourth largest air force in the world. Since our inception on 8th October 1932, our air warriors have always made the nation proud with their commitments and selfless acts of valor. Veteran legends like Arjun Singh, Meher Baba, Jumbo Majumdar, Kilor Brothers, and Sekho have etched their names in the history of the IAF, honoring it with their achievements. During the Kargil War in 1999, the IAF annihilated enemy targets on the icy Himalayan heights with precision strikes. The air warriors have made massive strides towards self-sufficiency. The 2nd Squadron of LCA Tejas has now been inducted and is fully operational to achieve air superiority. The indigenously made ALH Dhruv is proving its versatility in high-altitude missions, while the attack variant ALH Rudra is primed for battle from the deserts to the Siachen Glacier. The homegrown DRDO-developed Dhruvastra and Akash surface-to-air missiles strike fear in the enemy's mind by their mere presence. The Sukhoi 30 MKI is all the more deadly with the integration of indigenously built BrahMos and Astra missiles. Rohini and Ashleisha radars are complete make-in-India assets, keeping our skies sanitized. Netra, our very own airborne early warning and control system, acts as a command center. Coordinating all of them is the state-of-the-art integrated air command and control system, a key instrument in the age of network-centric warfare. A complete believer in the Make in India program, IAF is moving forward with plans to indigenously build the latest transport aircraft, C-295. Today, IAF boasts of world-class inductions with the Rafale, Apache, and Chinooks gracing our inventory. S-400, Spider, and MR-SAM protect the skies. Our air warriors, proud, vigilant, and ever dutiful. Self-developed swarm drones will lead tomorrow's battles, while the HTT-40 will train the future air warriors. In pursuit of a complete digital workplace, IAF has inducted the latest technology to make all its paperwork online with the e-Office and e-MMS project. Access to digital platforms makes work easier and training comprehensive. Exchange of experience, knowledge, and enhanced interoperability has always helped air warriors hone their fighting skills. The role of the Indian Air Force has been distinctive in humanitarian assistance and disaster relief, be it floods, earthquakes, or wildfire. The air warriors came as saviors from the sky. Multiple rescue and evacuations made by the IAF have been critical in the success of saving many lives. This was also evident when the IAF's C-17s evacuated over 600 people, including hundreds of foreign nationals from Afghanistan. One of the first and fastest responders to contingencies, the IAF's role in Eastern Ladakh has been extremely crucial and critical in sheer show of might and power. In its battles against COVID-19, IAF carried out more than 1,900 sorties across 3,800 hours, covering more than 27 lakh kilometers. Harbingers of hope, IAF's mighty fleets brought in relief, rescuing people from COVID-19 affected areas. Ventilators and critical medicines were delivered to the remotest corners of the country. Our veterans were not forgotten in these difficult times. Under Operation Koji,
IAF provided extensive medical assistance to veterans and their dependents. On its 89th anniversary, IAF is also a part of the celebrations towards Azadi Ka Amrit Mahotsav and Swarnim Vijay Varsh. With the advent of more Tejas and induction of S-400 missile system, the IAF is even more lethal and gives pause to any enemy. A new India faces a new world, and the Indian Air Force is determined to safeguard its boundaries and interests. Our air warriors selflessly fly into the blue yonder, only to stand in harm's way, to strike fear in those with malicious intent. To give a message loud and clear to the world, the Indian Air Force is Atmanirbhar and Saksham to take on any challenge or threat on mission mode. Jai Hind! सब लोगों की है तुझसे आस, सब लोगों की है तुझसे आस। सौजन्य
BRO, सीमा सड़क संगठन। यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। We have one rule. Family always comes first. And with our family, we believe in unity and trust. For when our family of 1 billion wake up, they feel safe knowing that we are ready.
ready to safeguard their dreams, protect their passion, steadfast and steady. With every wave comes a new challenge, but not strong enough to throw us off balance. We float above the sea. We also fly over it. For when you're stuck in the dark, like a ray of hope, a new challenge we embark. Here, a call for help never goes unheard. Always watching, always vigilant, always undeterred. From protecting marine life to saving the sea, from safeguarding our countrymen to preserving solidarity, we are a peacekeeping force and are on alert all the time. We protect, we guard, and we secure the 7,517-kilometer Indian coastline. No matter how deep the sea, to save lives, we challenge the course of destiny. There are days we heal wounds and wipe away tears. And days we guard our loved ones and eliminate all fears. Some days we attend classrooms, take lectures. Other days we attend emergencies in choppers. We battle monsters that hide among the sea, disguised to look ordinary. We risk it all to stand tall, always protecting our family. We fight the ocean. And some days we fight for the ocean. Here, we look up to Mondays and Tuesdays and other days. We have our eyes everywhere, the sea, the land, the air. Because no 2 days are alike, each day a different surprise. This is our home, and this is our family. We must give it our all to protect freedom, dreams, and our diversity. We are the Indian Coast Guard, and we love a different challenge every day.
story of the Battle of Longewala. Major Kuldeep Singh Chandpuri, winner of the Mahavir Chakra Award for gallantry, and his rifle company are not likely to forget the massive surprise attack spearheaded by a Pakistani brigade and an armored regiment of Chinese-made T-59 tanks. The attack came suddenly in the early hours of December the 5th, 1971. Not only did the Major and his company hold their ground, they inflicted heavy casualties on the enemy. By the first light of morning, it was clear that the Jawans, far from feeling cornered, were fighting with great personal grit and an offensive spirit. The surprise attack of the enemy was itself surprised. Indian Army scouts, watching and pinpointing enemy formations and movements, helped to keep the Major's guns accurate. Against successive tank attacks, recoilless guns were used to maximum advantage. At 7 in the morning, the Indian Air Force joined the fray. Enemy hopes were dashed completely by the swift and decisive action of our Air Force, which damaged or destroyed 95% of the enemy armor in this area. Said the Major, hats off to the Air Force chaps. Well, sir, hats off to you also. Nearly 36 Chinese-made T-59 tanks lie scattered like dead cockroaches in the sand. A fitting prize for the victory here was the capture of enormous amounts of arms and ammunition, and 2 tanks in running order. The Battle of Longewala changed the entire complexion of the war in this sector. Yes, these are the heroes of Longewala. With them, we celebrate victory and a return to what we hope is a lasting peace. Start.
defiant of challenges, old and new. Such up, we have always been, yesterday, today, and tomorrow. We train to fight, combat ready to attack each objective, always on a mission mode. We believe in mission, integrity, and excellence. We are the air warriors, protectors of our nation. Respected for the valor, sacrifice, and dedication beyond the call of duty, the Indian Air Force is the fourth largest air force in the world. Since our inception on 8th October 1932, our air warriors have always made the nation proud with their commitments and selfless acts of valor. Veteran legends like Arjun Singh, Meher Baba, Jumbo Majumdar, Kilor Brothers, and Sekho have etched their names in the history of the IAF, honoring it with their achievements. During the Kargil War in 1999, the IAF annihilated enemy targets on the icy Himalayan heights with precision strikes. The air warriors have made massive strides towards self-sufficiency. The 2nd Squadron of LCA Tejas has now been inducted and is fully operational to achieve air superiority. The indigenously made ALH Dhruv is proving its versatility in high-altitude missions, while the attack variant ALH Rudra is primed for battle from the deserts to the Siachen Glacier. The homegrown DRDO-developed Dhruvastra and Akash surface-to-air missiles strike fear in the enemy's mind by their mere presence. The Sukhoi 30 MKI is all the more deadly with the integration of indigenously built BrahMos and Astra missiles. Rohini and Ashleisha radars are complete Make in India assets, keeping our skies sanitized. Netra, our very own airborne early warning and control system, acts as a command center. Coordinating all of them is the state-of-the-art integrated air command and control system, a key instrument in the age of network-centric warfare. A complete believer in the Make in India program, IAF is moving forward with plans to indigenously build the latest transport aircraft, C-295. Today, IAF boasts of world-class inductions with the Rafale, Apache, and Chinooks gracing our inventory. S-400, Spider, and MR-SAM protect the skies. Our air warriors, proud, vigilant, and ever dutiful. Self-developed swarm drones will lead tomorrow's battles, while the HTT-40 will train the future air warriors. In pursuit of a complete digital workplace, IAF has inducted the latest technology to make all its paperwork online with the e-Office and e-MMS project. Access to digital platforms makes work easier and training comprehensive. Exchange of experience, of knowledge, and enhanced interoperability has always helped air warriors hone their fighting skills. The role of the Indian Air Force has been distinctive in humanitarian assistance and disaster relief, be it floods, earthquakes, or wildfire. The air warriors came as saviors from the sky. Multiple rescue and evacuations made by the IAF have been critical in the success of saving many lives. This was also evident when the IAF's C-17s evacuated over 600 people, including hundreds of foreign nationals from Afghanistan. One of the first and fastest responders to contingencies, the IAF's role in Eastern Ladakh has been extremely crucial and critical in sheer show of might and power. In its battles against COVID-19, IAF carried out more than 1,900 sorties across 3,800 hours, covering more than 27 lakh kilometers. Harbingers of hope, IAF's mighty fleets brought in relief, rescuing people from COVID-19 affected areas. Ventilators and critical medicines were delivered to the remotest corners of the country. Our veterans were not forgotten in these difficult times. Under Operation Koji, IAF provided extensive medical assistance to veterans and their dependents.
On its 89th anniversary, IAF is also a part of the celebrations towards Azadi Ka Amrit Mahotsav and Swarnim Vijay Varsh. With the advent of more Tejas and induction of S-400 missile system, the IAF is even more lethal and gives pause to any enemy. A new India faces a new world, and the Indian Air Force is determined to safeguard its boundaries and interests. Our air warriors selflessly fly into the blue yonder, only to stand in harm's way, to strike fear in those with malicious intent. To give a message loud and clear to the world, the Indian Air Force is Atmanirbhar and Saksham to take on any challenge or threat on mission mode. Jai Hind! विविध वर्णी संस्कृति और परंपराओं का देश है भारत। ऐसी विविधता विश्व में कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। भारत की इसी विविधता को लेकर पुरानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की विविध वर्णी संस्कृति और अनूठी परंपराओं के इतने रूप हैं कि देखने वाला चकित और अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। भारत की अतुल्य संस्कृति और अतुल्य परंपराओं का ही शानदार रूप है भारत का गौरव, भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य।
This is the story of the Battle of Longewala. Major Kuldeep Singh Chandpuri, winner of the Mahavir Chakra Award for gallantry, and his rifle company are not likely to forget the massive surprise attack spearheaded by a Pakistani brigade and an armored regiment of Chinese-made T-59 tanks. The attack came suddenly in the early hours of December the 5th, 1971. Not only did the major and his company hold their ground, they inflicted heavy casualties on the enemy. By the first light of morning, it was clear that the Jawans, far from feeling cornered, were fighting with great personal grit and an offensive spirit. The surprise attack of the enemy was itself surprised. Indian Army scouts, watching and pinpointing enemy formations and movements, helped to keep the major's guns accurate. Against successive tank attacks, recoilless guns were used to maximum advantage. At 7 in the morning, the Indian Air Force joined the fray. Enemy hopes were dashed completely by the swift and decisive action of our Air Force, which damaged or destroyed 95% of the enemy armor in this area. Said the Major, hats off to the Air Force chaps. Well, sir, hats off to you also. Nearly 36 Chinese-made T-59 tanks lie scattered like dead cockroaches in the sand. A fitting prize for the victory here was the capture of enormous amounts of arms and ammunition, and 2 tanks in running order. The Battle of Longewala changed the entire complexion of the war in this sector. Yes, these are the heroes of Longewala. With them, we celebrate victory and a return to what we hope is a lasting peace.
defiant of challenges, old and new. Such up, we have always been, yesterday, today, and tomorrow. We train to fight, combat ready to attack each objective, always on a mission mode. We believe in mission, integrity, and excellence. We are the air warriors, protectors of our nation. Respected for the valor, sacrifice, and dedication beyond the call of duty, the Indian Air Force is the fourth largest air force in the world. Since our inception on 8th October 1932, our air warriors have always made the nation proud with their commitments and selfless acts of valor. Veteran legends like Arjun Singh, Meher Baba, Jumbo Majumdar, Kilor Brothers, and Sekho have etched their names in the history of the IAF, honoring it with their achievements. During the Kargil War in 1999, the IAF annihilated enemy targets on the icy Himalayan heights with precision strikes. The air warriors have made massive strides towards self-sufficiency. The 2nd Squadron of LCA Tejas has now been inducted and is fully operational to achieve air superiority. The indigenously made ALH Dhruv is proving its versatility in high-altitude missions, while the attack variant ALH Rudra is primed for battle from the deserts to the Siachen Glacier. The homegrown DRDO-developed Dhruvastra and Akash surface-to-air missiles strike fear in the enemy's mind by their mere presence. The Sukhoi 30 MKI is all the more deadly with the integration of indigenously built BrahMos and Astra missiles. Rohini and Ashleisha radars are complete Make-in-India assets, keeping our skies sanitized. Netra, our very own airborne early warning and control system, acts as a command center. Coordinating all of them is the state-of-the-art integrated air command and control system, a key instrument in the age of network-centric warfare. A complete believer in the Make in India program, IAF is moving forward with plans to indigenously build the latest transport aircraft, C-295. Today, IAF boasts of world-class inductions with the Rafale, Apache, and Chinooks gracing our inventory. S-400, Spider, and MR-SAM protect the skies. Our air warriors, proud, vigilant, and ever dutiful. Self-developed swarm drones will lead tomorrow's battles, while the HTT-40 will train the future air warriors. In pursuit of a complete digital workplace, IAF has inducted the latest technology to make all its paperwork online with the e-Office and e-MMS project. Access to digital platforms makes work easier. Access to digital platforms makes work easier and training comprehensive. Exchange of experience, of knowledge, and enhanced interoperability has always helped air warriors hone their fighting skills. The role of the Indian Air Force has been distinctive in humanitarian assistance and disaster relief, be it floods, earthquakes, or wildfire. The air warriors came as saviors from the sky. Multiple rescue and evacuations made by the IAF have been critical in the success of saving many lives. This was also evident when the IAF's C-17s evacuated over 600 people, including hundreds of foreign nationals from Afghanistan. One of the first and fastest responders to contingencies, the IAF's role in eastern Ladakh has been extremely crucial and critical in sheer show of might and power. In its battles against COVID-19, IAF carried out more than 1,900 sorties across 3,800 hours, covering more than 27 lakh kilometers. Harbingers of hope, IAF's mighty fleets brought in relief, rescuing people from COVID-19 affected areas. Ventilators and critical medicines were delivered to the remotest corners of the country. Our veterans were not forgotten in these difficult times. Under Operation Koji,
IAF provided extensive medical assistance to veterans and their dependents. On its 89th anniversary, IAF is also a part of the celebrations towards Azadi Ka Amrit Mahotsav and Swarnim Vijay Varsh. With the advent of more Tejas and induction of S-400 missile system, the IAF is even more lethal and gives pause to any enemy. A new India faces a new world, and the Indian Air Force is determined to safeguard its boundaries and interests. Our air warriors selflessly fly into the blue yonder, only to stand in harm's way, to strike fear in those with malicious intent. To give a message loud and clear to the world, the Indian Air Force is Atmanirbhar and Saksham to take on any challenge or threat on mission mode. Jai Hind! Start. विविध वर्णी संस्कृति और परंपराओं का देश है भारत। ऐसी विविधता विश्व में कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। भारत की इसी विविधता को लेकर पुरानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की विविध वर्णी संस्कृति और अनूठी परंपराओं के इतने रूप हैं कि देखने वाला चकित और अभिभूत हुए बिना नहीं रहता।
भारत की अतुल्य संस्कृति और अतुल्य परंपराओं का ही शानदार रूप है। भारत का गौरव, भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य। गणतंत्र दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भारत की पुण्य भूमि पर एक नई सुबह, नए संदेश को लेकर आई ये सुबह, जब भारत मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। अनगिनत देशभक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना योगदान दिया, कष्ट सहे, बलिदान दिए, देश की माटी को अपने माथे का गौरव बनाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने, जब हमने अपना संविधान अपनाया। आज हमारे गणतंत्र बनने की सालगिरह है। इस बार निखरे और संवरे कर्तव्य पथ पर सजावट पहले से बेहतर है। दर्शकों की आकर्षक दीर्घाएं हैं, जनसमूह में उत्सुकता और जोश है। आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से उत्तरायण हुए सूर्य का असर अब मौसम पर साफ दिखने लगा है। आज की सुबह का मौसम शानदार गणतंत्र दिवस परेड के बिल्कुल अनुकूल है। कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है। राष्ट्र अपने अमृत महोत्सव में आज पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड का साक्षी बनेगा। गौरवशाली देशवासियों के साथ दुनिया भर के विदेशी मित्रों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष अवसर है। आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। Namaskar. As the largest democracy in the world awakens to celebrate its 74th Republic Day, we reach out to every Indian, not only across the length and breadth of this beautiful, diverse and unique country we call home, but also to those who, while living in foreign lands, feel that special tug of this ancient land. Republic Day greetings to one and all. Nestling a new name in its artistic aura, this historic avenue, now named Kartavya Path, is ready and waiting to host that celebration of
military movement, armored display, and cultural kaleidoscope we call our Republic Day Parade. It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today, these winter-washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness. Celebration, in fact, takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all, including the last, marginalized person. The engines of the largest democracy in the world are its people, its driving force. The 26th of January marks that day when our Constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity, and equality could an enduring, equitable, and empowering democracy rest. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। Welcome viewers to the newly refurbished Vista, where this magnificent parade will unfold, a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial, a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard, the newly named Kartavya Path. Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day we became truly independent and a democratic republic nation.
This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade. And this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen, as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. As India marks its platinum jubilee year of independence in Utkal, we rightfully have so much to be proud of, as we are all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolour, and here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favorite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals as well as the flypast by the Indian Air Force. 74वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा, जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी। पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, विदेश नीति के नए आयाम, ये सभी अमृत काल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के अमृत काल में भारत को G20 जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और G20 का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत काल में देश स्वर्णिम चमक बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरिए से अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि विकास पथ पर देशवासी लगातार आगे बढ़ते रहें। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क और रेलवे नेटवर्क के नजरिए से कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो उम्मीदों का नया सूरज यहां अपनी चमक बिखेरने लगा है। भारत के इस बदलाव में समाज के हर वर्ग का योगदान है। छोटे किसान बने देश की शान, कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं सूझबूझ से काम, और स्वामित्व योजना के परवान चढ़ने से हो रहा है सकारात्मक बदलाव। डीप ओशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और आर्थिक क्षेत्र में सहकारवाद पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं देश को बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति मिल रही है। गांव से लेकर शहर तक के कारोबारियों के लिए वोकल फॉर लोकल ने
ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोले हैं। हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। इसी सोच से पूरी दुनिया में भारत की नई छवि बन रही है। शासन में पारदर्शिता का आलम यह है कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। यहाँ 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हर वर्ग के छात्र जब मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। भारत के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स परीक्षाओं के नतीजे हों या ओलंपिक्स का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इसी दिशा में एक सार्थक पहल है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अमृत काल में आगे बढ़ रहे भारत की एक बड़ी उपलब्धि है G20 की अध्यक्षता। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित होगा। G20 शिखर सम्मेलन होने तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से भारत अमृत काल में नया अध्याय लिखने को तैयार है। A spectacle of this scale cannot be organized without massive organizational skill and military discipline, planning from a multitude of agencies. And each year, the parade showcases and celebrates our military might, the cultural diversity, and the tableaus depicting the progress and achievements, the rich traditions of music, dance, our soldiers, our freedom fighters, the brave children, the many talented other children and youth who take part in the parade, all coming together in the biggest event in the capital city. Thousands of participants who brave months of preparations under the most tough weather conditions and the tightest and most elaborate security arrangements to put up a spectacular, colorful and scrupulously choreographed show that is beamed across the country and beyond for everyone to see India at its most fine. The parade itself begins at Raisina Hill, Vijay Chowk, and traverses through Kartavya Path up to the National War Memorial and then goes on to Red Fort, a distance of around 8 kilometers. Special mention must be made of the departure from protocol this year to include in its invited guests. Right now you're seeing on the screen the many children who've been invited here, but essentially we're talking about the unsung heroes of our country, the Shram Yogis, who have contributed to the construction and renovation of this vista on which we are today. The Power Corridor, the new Parliament and the executive enclaves of the Vice President and the Prime Minister's office and residence. These are workers and also
street vendors, milk and vegetable vendors who are occupying the enclosure, which is opposite the saluting days, being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, of the people, and for the people. We also have some 200 students, which you saw a little earlier, students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha and our special guests of today's parade. The entire stretch from Rashtrapati Bhavan to the War Memorial has been renovated, and it's after 2 years of construction and refurbishment that we're getting to see this aesthetically designed ceremonial boulevard. The audience at Kartavya Path, seated on the newly installed bleachers with retractable seats that have been reduced and reorganized this year for around 45,000 seats, of which 32,000 are for the public. कर्तव्य पथ जो पिछले वर्ष तक राजपथ था, वो सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण और सुधार का परिणाम है। इस पूरे इलाके पर बदलाव की ऐसी बयार चली है जिसने इसके कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्षों से जिन बातों की जरूरत महसूस की जा रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। राष्ट्रीय समर स्मारक इंडिया गेट से आगे और ये कर्तव्य पथ सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है। 100 वर्ष से भी ज्यादा पहले बनाई गई इमारतों की जरूरत वक्त के साथ बदल गई है। इसमें आज के मुताबिक सुविधाएं और जगह को देखते हुए सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। रायसीना पहाड़ी पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन और रायसीना पहाड़ी के नीचे उतरते ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतें, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। विजय चौक के उत्तर में लोकतंत्र का मंदिर, भारत की संसद है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, ये सभी इमारतें 1911 से 1931 के बीच बनी थी। इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका स्थानीय और देशी पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहता है। काफी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि सुविधाओं की कमी पड़ रही है। सेंट्रल विस्टा का यह पूरा इलाका अब बदल रहा है। आने वालों के लिए सुविधाएं हैं, साफ सफाई है। यहां आने का अनुभव अब एक सुखद याद बनकर रह जाता है। नया भारत, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें, और इन्हीं उम्मीदों को नई उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की। पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को नया रूप दिया जाना शामिल है। सेंट्रल विस्टा परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, वर्तमान संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्थान की कमी और अन्य जरूरतों को महसूस करते हुए नए संसद भवन को भव्य और नई सुविधाओं के साथ विशाल स्वरूप में बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा चेंबर 3115 वर्ग मीटर में होगा और इसमें 543 सीटों की जगह 888 सीटें होंगी। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर राज्यसभा का निर्माण कुल 3220 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा।
इसमें 245 की जगह 384 सीटें होंगी। नए परिसर में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की छत पर स्थापित कांसे से निर्मित 9,500 किलोग्राम के 20.5 फीट ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष का अनावरण किया। ये प्रतीक भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के कर्तव्य पथ और ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा ऐतिहासिक इंडिया गेट के ठीक सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में स्थापित की गई है। एवेन्यू को पर्यटकों और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चाहे जन सुविधाएं हों या परिवहन, छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है और इसे नया रूप दिया गया है। आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा नए भारत के गौरव की नई कहानी बयां करेगा। Kartavya Path prettified and preening, and it seems that this ceremonial boulevard is very well aware of its importance today, eagerly awaiting the host that is going to happen of medley of music. And here we are, over here in the audience, specially invited Shram Yogis, people who have contributed to actually renovating and redoing this ceremonial boulevard. The aim and the theme, of course, is more inclusion of the common person and mainstreaming it. We have street vendors, small vegetable vendors, and also we have special invitees, young children who will be participating in Pariksha Pe Charcha, the program, 200 of them, all over here, special enclosures, frontline VIPs. So Kartavya Path actually waiting to host and eagerly awaiting to hear the sounds of a medley of sounds. Varied beats as the parade goes by, the crisp clip-clop of horse hooves, the gentle swoosh of softly padded camel feet, and the gentle tinkle of the bells as they go by. In fact, India is a nation on the move, and the nature of movement, however, is such that it always leaves things behind. It is the content of what we leave behind and what we take along with us that the context of the future rests. And as we celebrate our 74th Republic Day, our extraordinary existence as a civilization through centuries of change and as a republic for just over 7 decades is foregrounded. गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विदेशी अतिथियों की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1955 से वर्तमान आयोजन स्थल पर होने वाली भव्य और आकर्षक परेड में अब तक सर्वाधिक 5 बार फ्रांस और ब्रिटेन के अतिथि शामिल हुए हैं और बहुत से विदेशी मेहमानों ने साल दर साल गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के खास मेहमान हैं मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत और मिस्र इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद होंगे। मिस्र, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला अरब गणतंत्र देश, जो गीजा के पिरामिड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मिस्र और भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक और दोस्ताना संबंध रहे हैं।
दोनों ही देश इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन्हीं संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में इस बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। ये पहला अवसर है जब 26 जनवरी की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र की सेना में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। 2010 से 2012 तक उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में काम किया। वहीं साल 2012-13 में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 2013 और 14 में मिस्र के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जनवरी 2014 में उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नति मिली थी। इसके बाद 2014 में ही वो मिस्र सेना से जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए। अब्देल फतह अल सीसी 2014 में मिस्र के छठे राष्ट्रपति बने और 2018 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हीं के कार्यकाल में मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में एक बना। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि अब्देल फतह सीसी की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। India and Egypt share close political understanding based on a long history of contact and cooperation in bilateral, regional and global issues. Both countries have cooperated closely in multilateral fora and were the founding members of the non-aligned movement. As you can see visuals coming to you from the saluting base, we've got an invited audience that is really keen and waiting patiently in this cold weather for the parade to begin. We also have 200 students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha as special guests of today's parade. And you can see them enthusiastically waving to the camera as it's spanning across, taking their pictures. This year's celebrations reflect the Prime Minister's vision of Jan Bhagidari, and the week-long celebrations for Republic Day begin on the 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and ends on the 30th of Jan, which is Martyrs' Day. Some other highlights of this year's celebration sees a special cultural extravaganza, that is the Vande Bharatiyam group of dancers drawn from across the country. We've got Tales of Bravery by Veer Gatha 2.0 participants, a special military tattoo and tribal festival, melodious performances by an All India School Band competition, military and Coast Guard bands at the National War Memorial, NCC camps, digital sculpture projection, drone show, projection mapping, digital tributes at the National War Memorial, the Tyag Chakra, and of course Bharat Parv celebrations. The Republic today reminds us that as a nation we have entered the last quarter of our centenary celebrations, truly a period of Utkal to touch new heights of glory and attain new pinnacles of development, growth and harmony. We should also all pledge today to work together and leave no stone unturned towards taking the nation forward and always serving the nation first before self. 75 वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ, फिर हमने संविधान अपनाया, हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने। हमारे लोकतंत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जिनसे दुनिया विस्मय करती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सभी को स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर इसी संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि देश के कोने कोने से साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी शीर्ष और सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। देश के स्वतंत्र होने से पहले इस तरह की कल्पना कठिन थी, लेकिन अब बदलाव की ये मानव परंपरा सी बन चली है।
भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade.
It is, of course, a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में।
जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 6 जैगवार विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, one from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है
कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ। जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade 2023. To ensure the seamless and smooth live telecast to you. All in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 60 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions. From Rashtrapati Bhavan to National War Memorial. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs. 1 PTZ has been placed on top of retractable roof of presidential enclosure. For a versatile and the bigger picture of Kartavya Path. 2 Jimmy Jibs and 1 180-degree fisheye camera to ensure each and every moments will be captured. 15 cameras have been installed at National War Memorial. We have 2 Jimmy Jibs at NWM. Strategically placed on the top of the crane at India Gate. And 3 cameras on the top of India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras with Jimmy Jib near Burji of North Block. 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 60 cameras are supported and interlinked by high-definition OB vans placed at Kartavya Path, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber and satellite connectivity to a production control room with magnificent monitor wall setup at Kartavya Path. For this live telecast, the overall in charge is Usha Pawar. Engineering in charge, Abhishek Agrawal. Program in charge, Anup Khajuria. And it's being produced by Jitendra Singh Chauhan. On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. वीको वज्रदंती, इतना झाग नहीं, शायद टेस्ट नहीं, लेकिन आपके गम प्रॉब्लम्स पर असर सही। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांत रखे हेल्दी। मजेदार नहीं, असरदार। वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. An important marker of the start of the Republic Day Parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहां पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। ये स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया।
ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme, because the call a soldier answers raises no doubt, no question. राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है और प्रतीक भी। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पिछले वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था। हमारे वीर सैनिक जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, हम घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं, जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अमर जवान को नमन। Amar Jawan etched in gold, fire sacred and pure, rising from the depths of substance. The nation, its safety, integrity and protection come first, always and every time for our soldiers. In fact, leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. An attitude colors your thoughts, words and actions constantly, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its finest form. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived here at the memorial, and before the parade begins, Prime Minister Narendra Modi, on behalf of a grateful nation, will pay homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, at the National War Memorial here, which is near India Gate. The 3 service flags and the national flag catching the morning breeze.
harmonizing seamlessly with the surroundings, the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। Antarjanagat! Salame! Shast! Antarjanagat! Shok! Shast!
Guards, अंतर्जन guard, salame, shast. अंतर्जन guard, bajam, shast. The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra, or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है। हाँ, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है, हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में
74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। आज सुबह धुंध छाई हुई है, लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Srimati Draupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसी मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day. The official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment. It carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen, and
paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony and grandeur. And there right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह करतल ध्वनि यहाँ जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts and of course the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़,
Swagatam, we welcome you with open arms and open hearts, and escorting their Supreme Commander, the President's bodyguard, approaching the saluting base in their winter ceremonials. Blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs. 9 feet, 9-inch long lances, and red and white cavalry pennants. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the chief guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवी और सज्जनों माननीय के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विश्व के राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी भी उपस्थित। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment, as Rajpath will resonate to the 21-gun salute. The national anthem will echo.
The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command, set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर अब इंसर्जेंसी कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए। बेहद खास अवसर 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armored Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17 Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद। जैसे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित
हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मृत आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में। 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. The motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see
formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil
echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the
marching contingent from the Air Force. We have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads. In the center, you've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से बढ़ता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स। युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार। कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाई बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune.
102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chandseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers, and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिंजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ।
BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Scindia School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honorable President hails. Contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं।
आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य। The visual treat has just started. Diverse culture, traditions, And now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है।
झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेड़ू खुशाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नु जतन थाय। हे सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छમાં હાઇબ્રિડ પ્લાન્ટ ઊભા થાય ને આઠે પ્રહર ગ્રીન ગ્રીન એનર્જી પેદા થાય ગુજરાત। Renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories, and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Vedanath temple located in Deoghar. Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand, we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. You've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वलयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भक्तों का तो बलिदानी, अमरनाथ का बलवानी, जय जय बम भोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर, और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal, the tableau, which will now come on next.
will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्याशक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्यापासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतरे शक्ती माता साडेतीन शक्ती पीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. हरि की भूमि हरियाणा मिले तीज त्योहार मनाना कुरुक्षेत्र से सारे जग गीता उपदेश सुनाना रण की माटी को माथे का मिलकर तिलक बनाना गुरु द्रोण की इस धरती पे सबने शीश झुकाना वेदों की इस
and galloping horses, signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं